Okay, hi Deep. How are you? Sir, fine. I am fine, sir. Great, great. So, can you please introduce yourself? Yes, sir. Good afternoon, sir. First of all, I am thankful to you to give this opportunity to me. I am Deep Dave. I am from Bhavnagar, Gujarat. I done my BE in mechanical engineering from GH Patel College of Engineering and Technology in Vallabh Vidyanagar, Anand with 8.83 CGPA. My favorite subjects are thermodynamics, engineering, mechanics, strength of material, and heat transfer. That's all about me. Thank you, sir. Okay, so I'll be very honest. You need to extend your tell me about self a little bit. But Okay, this sir. is okay, nothing. All right. Okay, so what is Newton's second law? Yes, sir. Newton's second law stated, sir, rate of change of the momentum gives us to net force, sir. And from this, we developed the equation that summation of force is equal to mass into acceleration. Correct, correct. And do we use something like Newton's second law in rotational mechanics as well? Yes, sir. Rotational mechanics in sir where rotational mechanics में सर समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा वहां पे मास के जगह इनर्शिया होगा और फोर्स के जगह पे हम टॉर्क फाइंड करेंगे सर Correct. So, what is moment of inertia? सर movement of inertia represents sir resistance to motion in angular motion sir Correct. So, same as mass showing resistant in linear motion and correct. So, here is a problem to you. Consider a wedge at angle theta. Draw it actually. There is a yes sir wedge at angle theta, yes sir where is and angle yes, theta and yes. there is a spring at the bottommost part of it. Spring at bottommost part, sir. Bottommost mean on Ground the wedge, work, okay? spring to No, not ground. It is on the wedge only, okay, sir. okay? And then there is a mass m, something like mass m attached to that spring, Yes, sir. okay? And right now, the spring is in free condition, means it's not loaded, not stretched, not compressed, okay? Yes, sir. I am holding the mass m with my hand right Yes, sir. now, Yes. for example. Yes, sir. Can you show me the figure? I just want to know if you have uh, done it right. No, no, the wedge, the spring is on the bottom. The place where you have drawn the theta. Oh, to bottom edge space. बॉटम एज पे द एंगुलर एज जो है ना वहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है ड्रॉ करो. Okay, sir. नहीं ऐसे वर्टिकल नहीं है भाई. मास ऐसे वर्टिकल कैसे रहेगा तुम बताओ मुझे. मास वेज पे है. सर स्प्रिंग पे आपने वो पहले बोला कि हैंड से पकड़ा हुआ है सर. ओके नहीं वो वेज पे ऐसे रखा हुआ है मैंने ना स्लाइडिंग वेज पे रखा हुआ है. ओके सर स्प्रिंग नहीं है ना तो सर वहां पे. हाँ स्प्रिंग है ये स्प्रिंग है. दैट कॉर्नर पॉइंट टू अप स्प्रिंग है. डू यू वांट मी टू ड्रॉ इट. ओके यस सर एक बार ड्रॉ. कैन यू कैन यू सी इट सर हियर. ब्लर सर सर यस यस यस. तुम्हें वो क्लैरिटी मिल जाएगी जस्ट. आई थिंक यू गॉट इट. यस सर. यस करेक्ट करेक्ट. So, consider this is an equilibrium condition. What will be the exactly condition of the spring here? मीन सर पहले अनस्ट्रेच होगा फिर हम मास को जब लीव करेंगे तब क्या कंडीशन होगी भाई ना सर. नहीं 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 मास अभी इक्विलिब्रियम पे है. सब कुछ स्टेडी है बस मतलब रुका हुआ है सब कुछ. Everything is यस steady. सर. Yeah, then what will be यस the सर. condition of spring in this case? Condition of the spring Yes, let's say intensity. spring has constant K. Stiffness. हाँ Yes, stiffness K. stiffness. Yes. K yes, and X is let's say Yes. deflection of spring in case if any. And
सर सरफेस फ्रिक्शनलेस मान No, no, लेनी no है। surface friction. No surface friction. yes, sir, तो kx is equal to सर mg को kx is equal to mg sin theta means सर स्प्रिंग में सर कंप्रेशन mg sin theta by k होगा सर। Correct, correct. Now this was case one, mg sin theta by k. Your answer is correct. Now there is a case two, another one, in which there is this spring, yes sir, and I have the spring is in unstretched, that means natural position, yes sir, natural and position, correct, and then there is m mass attached to it at the top, just same figure, okay. yes sir, That means, is the spring offering any force to mass? no sir, natural position means no force No force. exactly, Correct, correct. So now what I did was I left the spring. I let the spring go. Sorry, not spring. I let the mass go. yes sir, Okay. What will happen now? मास सर मास टॉप पोजीशन पे होगा ना सर, क्या? मास वेज की टॉप पोजीशन पे है ना सर। वहीं पर है जैसे हमारी पुरानी फिगर थी, बस वैसा ही फिगर है. ऑल आई एम सेइंग इज कि in this case the spring is unstretched and I am holding the mass with my hand. ओके सर, ओके सर। Good. Now I let the mass go. What will happen? यस सर, 1 मिनट सर। बताओ दीप, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर Do you- वहां पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा था सर कि अगर मास हम पहले हमने हाथ से पकड़ा था और फिर रखा तो सर स्प्रिंग को एक्स अमाउंट अगर कंप्रेस करता है तो हम्म, सर उसकी सर उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। जब कंप्रेस पोजीशन को होगा उसको हम वह पोजीशन में अगर 1 मान लेता हूँ तो उसके इनिशियल जब जो पोजीशन पे जो हमारा ब्लॉक था एम मास का उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग को इक्वेट करके सर मैं एक्स निकाल सकता हूँ सर। करेक्ट. सो इस केस में जो एक्स आएगा वो पहले वाले केस से ज्यादा होगा, कम होगा? सर ज्यादा होगा पहले वाले केस से। क्यों? सर इसमें इम्पैक्ट फील हो रहा है सर उसके कारण। Okay, now if I ask you to draw the velocity versus x diagram of the mass m. वेलोसिटी वर्सेस एक्स डायग्राम सर मींस Yes, डिस्प्लेसमेंट। correct. मैं भी ट्राई करूंगा, मुझे वेलोसिटी भी नहीं वर्सेस पता आंसर. चल चल से ट्राई. ओके. सर लेकिन वह तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से जो हमें एक्स मिलेगा उसको हम डेरिवेट करके वेलोसिटी फाइंड करने के बाद प्लॉट कर पाएंगे ना सर। Now that you have to think. I know I can. एक सेकंड। Or just draw an indicative graph. I don't want very equation based one. Just tell me how it will look. ये लुक सर parabolic initial gain velocity complete velocity मीन सर जो इनिशियली हमने ब्लॉक को सर
पकड़ा था, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फिर वेलोसिटी व पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वह फिर स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। मतलब एनर्जी फिर से वेलोसिटी का ग्राफ डाउन होगा और एट द एंड वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी सर। और पैराबोलिक मुझे नेचर लग रहा है सर उसका। ठीक है, एंड व्हेन ओके, सो यू आर सेइंग दैट फर्स्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, राइट? Yes, sir. First, velocity increase and then decrease. Yes, sir. ठीक है, so during this increase and decrease there will come a highest velocity part, right? Yes, sir. When will this happen and why? Uh, highest velocity. सर प्रॉपर तो आइडिया नहीं है, लेकिन सर उसके उस टाइम पे सर पोटेंशियल एनर्जी है वह कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो वह मैक्स होगी और वह उसी टाइम पे कोई अभी स्प्रिंग फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा होगा। अगर स्प्रिंग फोर्स जैसे एग्जर्ट होगा ऐसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी भी उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके कारण सर। Okay, so draw another graph now. Spring force versus X. Spring force versus X graph draw करो. Yes. Mm. This is very easy, you know. X is here is deflection, okay? What will be Yes, the sir. spring? Spring got it, please. Yes, spring force Yes. versus X का ग्राफ कैसा आएगा? Mm. Okay. It's so easy. The स्प्रिंग फोर्स कितना होता है डिफ्लेक्शन के साथ? व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला? सर पैराबोलिक वेरिएशन होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। सॉरी, स्प्रिंग फोर्स सर। यस, स्प्रिंग फोर्स। सर सिर्फ के एक्स सर लीनियरली वेरिएबल होगा सर। करेक्ट, एंड जब डिफ्लेक्शन 0 होगा तब मेरा स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, राइट? यस सर, डिफ्लेक्शन 0 होगा तब 0 होगा सर। करेक्ट। नाउ अर्लियर यू सेड कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू 0 होगा तब, राइट? यस सर। या नाउ स्प्रिंग फोर्स 0 कब है? जब मैं स्टार्टिंग पोजीशन में मेरा 0 है, स्टार्टिंग पोजीशन में स्प्रिंग फोर्स 0 है, राइट? एंड स्टार्टिंग यस पोजीशन सर। में तो मेरा वेलोसिटी 0 है। सो व्हाट यू सेड? लेकिन सर तभी ब्लॉक ने अभी हिट भी नहीं किया होगा ना स्प्रिंग को, तो फिर एक्स मिलेगा नहीं ना। अब तो हमें वेलोसिटी मैक्सिमम जो ब्लॉक की जो वेज की पोटेंशियल एनर्जी के कारण मिलेगी ना सर, एम जे एच के कारण। Yes, yes, yes. मुझे I know what I'm trying to say is what you said is a little off from the reality. That's what I'm trying to tell you. My question is, what will ओके be the सर। point when the velocity will of the block will be maximum? Okay. Should I draw a whiteboard maybe? Where is whiteboard here? There is whiteboard, right? Yes, got it. Sure. Okay. Can you see the whiteboard? नहीं सर, अभी तो नहीं दिखा रहा। अभी दिख रहा होगा ना? अरे कहाँ गया? नहीं सर, नहीं शो हो रहा। सर मेरी साइड अरे से व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करो सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे करना होगा ना। So okay, now it ओके must be सर, visible. अब शो हो रहा है। So you यस know, सर। yes, yes. So we have, अरे अरे पेन भी कौन सा है? ठीक। Yes, great. So this is my wedge. This is something like angle theta. यस सर। This is my spring.
This is mass m, right? Yes sir. So I ask you कि given right now जब initial है तब मेरा x is 0, Yes sir. right? My x is 0. That was my initial condition. So I ask you to draw v versus x diagram, right? सर सर थोड़ी आवाज कट I ask you to draw v versus x diagram. रही है सर. Yes sir. So you हेलो said how will be the सर diagram आपकी v versus आवाज x? सर, सर आपकी आवाज कट रही है सर. I think it's from your side if I am right. सर यस सर अब क्लियर है सर. So I ask you to draw v versus x diagram, right? यस सर. यस सर. So what will be the v versus x diagram? Okay, I सर think in group we have Akshay and Tushar as well. भाई आप भी थोड़ा try करो ये question, ठीक है? यस सर. Tushar, you were just here. Akshay, you यस as सर. well, please. So what I'm asking is what will be v versus x diagram? सर इनिशियली तो वेलोसिटी सर जीरो होगी फिर मैक्स होगी और फिर जीरो Correct. So you are saying something like this, होगी right? सर. Yes. So my question number one is how to find this curve, यस सर. and my question यस number सर. two is what is this point? सर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को हम डेरिवेट करते हैं तो फिर शायद मिल सकता है. Then can we do it in x direction? So total energy conservation will be half kx square at any point plus हमें mgh का नेगेटिव रहेगा और हाफ एम ओके हाँ मिल सकता है आई एग्री बट दैट्स लिटिल लॉन्ग अप्रोच मिल सकता है दैट्स अ गुड अप्रोच एक्चुअली आई लाइक इट सर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम जो लास्ट पॉइंट पे जो पहुंचेंगे वो डेटम लेते हैं तो सर. यहाँ पे नहीं मैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के अप्रोच में बोल रहा okay था okay सर. okay leave total energy conservation I'll tell you how what is answer of this how to get this curve my question is what will be this point यस सर. वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सट्रीम. okay so Deep what I'll do is I'll conclude your session right now okay and you think in the background okay till that we will take interview of Akshay यस is सर. yet to interview yes we'll do that okay ओके सर. okay so ओके you सर. have two question one is how to get the curve okay that means I want v as a function of x ओके सर. ओके okay सर. and my मैंने second is यस सर. and obviously answer to this question is actually more intuitive you don't even need this v as a function of x for that ओके सर. और सेकेंड सर क्वेश्चन उसका कहो क्या होगा कहो का नेचर वो फाइंड करना है ना सर. हाँ वो करो देख ये सेकंड क्वेश्चन इज मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली ठीक है ओके ओके हाँ सर. if you get v of x okay so if you get v of x then you can get v dv by dx easily यस सर. और which will be this point right मैक्सिमम में फाइंड. yes so I don't want you to use this I want you to tell the answer directly okay I'll stop here okay यस यस सर. so ओके सर. Deep you have good knowledge actually see मैंने आपको थोड़ा मैकेनिक्स साइड इसलिए ग्रिल किया यस बिकॉज सी इफ यू से मैकेनिक्स दे विल गोइंग टू आस्क यू मैकेनिक्स ओके it's extremely easy and very nice यस सर. to form questions in mechanics okay यस actually सर. ये मैंने आप यस मैंने एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी यूज की थी मैंने मैकेनिक्स बोला था वहां पर
and they asked me a lot Yes. of mechanics question, and I was confident, तो मैंने सारे question के answer दे दिए थे. That was not a big deal for the Yes, moment sir. actually. But what I'm trying to say, if you are saying mechanics, you need to have a good mechanics. Okay, command I may say. ओके सर, ओके। एंड सर, मुझे आपको सर एक बात और सर पूछनी थी। मैंने आपको सर मैसेज भी किया था कि लास्ट टाइम मैंने बार्क एससी का इंटरव्यू दिया था ना सर, तो हाँ उसमें भी